क्वेश्चन पई हमारा यूज हला जावा सर्वलेट इंट्रोड्यूस हला सीजीआई रे कोन कोन प्रॉब्लम आसला ना सीजीआई इज नॉट स्केलेबल माने जदी हमर रिक्वेस्ट टा बढ़ी जाउची 50 रु 5000 भितरे ताले सीजीआई से प्रेशर टा को हैंडल करि पारेने सेति में हमर कोन यूज करा हला ना जावा सर्वलेट तो जावा सर्वलेट इज व्हाट ना जावा सर्वलेट is a Java technology class which is used to create the web application or for giving a functionality to the web application. Web application है हमारा functionality से show करियो. That is called as what? Your servlet. The servlet is a Java technology program. It is similar to the CGI program. But for running this application we require a server तो हमर गोटे सर्वर दरकार पड़िबो लोकल सर्वर जोडा हमें कहि परिबा से लोकल सर्वर हमर दरकार पड़िबो जेमति कि हमें जदि लोकल मशीन ने रन करूछे सेठी हमें यूज करूछे लोकल होस्ट हमें यूज करूछे so we are using local host for running the local host server okay so पे लिखा हेडिंग दिया servlet what is servlet pen and paper work करो तो सर बारकला अलीवा स्मृति जयश्री Yes, sir. Yes, sir. like a Java servlet is a Java technology program. Java servlet is a Java technology program which is similar to a CGI program and it runs on server. The basic next point the basic functionality of Servlet is similar to the CGI application the basic functionality same आसीबो but अभी तो डिफरेंस कोन रहइबो ना जेते बेले CGI रन करूची CGI तार ओन OS सेल बा ऑपरेटिंग सिस्टम सेल से क्रिएट करूची जोटा कि बेसी हेवी वेट टैक्स फॉर ए सर्वर बट आमे जेते सर्वलेट यूज करिवा सर्वलेट इज क्रिएटेड ए थ्रेड माने गोटे OS सेल रे CGI कला कोन ना गोटे OS सेल रे गोटे रिक्वेस्ट प्रोसेस हे परिबो किंतु सर्वलेट रे गोटे OS सेल रे मल्टीपल रिक्वेस्ट प्रोसेस हे परिबो जस्ट एग्जांपल में देखौ छी
एटा होची सीजीआई मॉडल एटा हमें रिक्वेस्ट पठेबा पर गोटे रिक्वेस्ट पई गोटे वेस सेल क्रिएट हबो फॉर वन रिक्वेस्ट one वेस सेल इज क्रिएटेड for one request for one request one CGI cell is created, one another request another CGI cell is created, for another request another CGI is created. So every request ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ CGI create ହବ. So CGI creation is very heavyweight task for a server. Okay, तो सेति पे हमें यूज कले कोन हमें यूज कले जावा सर्वलेट. तो सर्वलेट रे कोन हबो एठी आउ CGI क्रिएट हबो एठी गोटे वेब कंटेनर क्रिएट हबो माने गोटे CGI रे कोन होतला गोटे रिक्वेस्ट प्रोसेस होतला तो CGI रो कन्वर्जन होची कोन वेब कंटेनर तो गोटे वेब कंटेनर रे हमें मल्टीपल रिक्वेस्ट प्रोसेस करि पारि so multiple request process by using one web container because of instead of writing CGI we are using here thread CGI बदलला में thread use करछे so by using of thread we are processing the application तो एटा लेखो बुझियला CGI और सर्वलेट रो भितरे डिफरेंस जयश्री स्मृति अलिवा Yes, sir. स्मृति सुनुच Yes, sir. next one लिखो however the servlet runs as a thread servlet runs as a thread servlet runs as a thread in a web container servlet runs as a thread in a web container instead of separate OS process the web container itself is an OS process the web container itself is an OS process but it runs as service and available continuously then what are the different advantages and disadvantages of servlets that we are now going to discuss each request so servlet रे कहां हमें जिते request पठेबा every request is run in separate thread every request run in a separate thread so servlet request processing is significantly faster than the traditional CGI थारो servlet टा होची बहुत faster servlet are scalable okay servlet are scalable that means many more requests can be executed because the web container uses the thread ने गोटे समय रे हमें multiple request process करिवा it is a scalable and servlet are robust why it is robust as because it is support the object orientation support कले हमें गोटे प्रोग्राम रो फंक्शनलिटी को एनहांस करि परिबा servlet can be written in any Java programming language which makes them to write
Servlet is platform independent. Servlet टा होची platform independent. Means आमे जेकोनोसी ऑपरेटिंग सिस्टम रे चाहिबा ताको रन करि परिबा. So that is called the platform independent. माने every device रे work हबो, every operating system रे हमर work हबो. Platform independent means in any operating system it works. Servlet has accessing the logging most CGI do not have. Servlet have access to the logging capability. Logging capability means तर मु इंटरैक्शन करूची सर्वलेट सहित तो किए सर्वलेट सहित इंटरैक्शन कला तार ट्रैकिंग सर्वलेट करि परिबो. The web container provide additional service to the servlet such as error handling and security. Error handling and security हमें maintain करि परिबा कोठी सर्वलेट रे. एबे लेखो what is the advantages. Each request run in separate thread. Each request run in separate thread. So servlet request processing is significantly faster than traditional CGI. Next point is servlet are scalable. Servlet are scalable. Many more requests can be executed. Many more requests can be executed. Many more requests can be executed. Because the web container uses thread rather than OS process. Next point, servlet are robust and object oriented. Servlet are robust and object oriented. Next point, servlet can only written in Java programming language. Servlets can only written in Java programming language. Next, servlets are platform independent. Servlets are platform independent.
it provide additional service. Servlet provide additional service such as error handling and security. Okay, so it has also some kind of disadvantages. What is the disadvantages? It's saying that the business logic and presentation logic present in one place. So that is the one disadvantages. Business logic and presentation logic is present in one place. Then Servlet must handle the concurrency issue. Concurrency issue kind of ना जदि आमर जो कोडिंग टा लिखिबा डाटा को प्रोसेस करिया पई आ डिजाइन टा जो करबा सेटा जदि गोटे प्लेस रे रहिबो ताले आमर कनकरेंसी बा कॉन्फ्लिक्ट आसीबो तो लेख डिसएडवांटेजेस सर्वलेट हैंडल कनकरेंसी इशू एक्चुअली सर्वलेट टा कोन तो एटी देखो मो सर्वलेट रो पिक्चर टा देखौची just I'm showing you a picture. No, picture. Servlet it can run within the Java EE container. Container means what? It is a place where all the items are present. So Java EE provide that container where you can get all the information about the container. So it is a container architecture. It is called as the web container. Ako ame web container boli koi pariba. It is supply the implementation of the Java Servlet API. API components that are managed by the web container to respond to the HTTP request. That is a Java web container. So Java web container or Java Servlet koti run hobo. Now Java Servlet run in the Java EE component. Java Servlet is run in the Java EE. EE stands for Enterprise Component. So lekho Java Servlet it runs within Java EE Java EE container.
Okay, so when we are creating any application, आमे जेतबे कोनोसी application बनैबा और website बनैबा हमको तीनटा पार्ट दरकार. So we divide the web application into the three part. One is presentation, business logic, another is data access logic. So first of all we have the presentation logic, business logic and data access logic. Presentation logic is what? It is the topmost tier of the web application architecture. So the top level le hamara thai presentation logic. This layer provide a user interface that allow the user to interact and communicate with the application. Business logic na it handle the middle tier web application architecture. It contain the logic related to the business decision of the organization. For example, in an online banking application, the interest calculation of personal loan is the one of the business decision that can be implemented by the business logic tier. तापर होची प्रेजेंटेशन ने जोटी हमें इंफॉर्मेशन पास करिवा. बिजनेस लॉजिक रे हमर डेटाटा जोटी प्रोसेसिंग हबो. डेटा एक्सेस लॉजिक रे कोन हबो ना जोटी हमर डेटाटा परमानेंटली स्टोर हबो. सो दीज आर द हैविंग अ थ्री पार्ट. वन इज प्रेजेंटेशन लॉजिक, business logic and data access logic. So our application is divided. So we divide the web application into the three tier. Application टा तीनटा tier बा तीनटा स्तर रे डिवाइड हिता है. फास्ट होची प्रेजेंटेशन बट जोटा कि हमें HTML पढुचे सेठी हमें इंफॉर्मेशन दबा. जो इंफॉर्मेशन दबा सेटा वैलिडेट हबो बा प्रोसेसिंग हबो. सेटा प्रोसेसिंग हबो बाय यूजिंग ऑफ बिजनेस लॉजिक. प्रोसेसिंग हला परे से इंफॉर्मेशन जे के डेटाबेस रे स्टोर हबो. तो सेति पे हम यूज करबा डेटा एक्सेस लॉजिक. It is the last tier in the web application architecture. It contains the logic that enable you access the data stored in the various data source. हमें से डेटा टा को Oracle ले स्टोर करि परिबा, SQL सर्वर रे स्टोर करि परिबा. Okay, so in any database that we want to store, we store in the data access logic part. बुझिला जयश्री अलिवा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in next class we start with the another three tier architecture. Now तीन tier जो architecture है सेटा पढ़ी. Okay, चलो.